with other challenges, especially in its own neighborhood. Some of them may be aggravated by the COVID pandemic and ongoing conflicts, but they speak too of a deeper malaise. The accumulation of debt in fragile economies is of particular concern. We believe that in such times, the international community must rise above narrow national agendas. India, for its part, is taking exceptional measures in exceptional times. We do so when we send 50,000 metric tons of wheat and multiple tranches of medicines and vaccines to Afghanistan. When we extend credits of $3.8 billion to Sri Lanka for fuel, essential commodities and trade settlement. When we supply 10,000 metric tons of food aid and vaccine shipments to Myanmar. When we fill the gap in humanitarian needs left unaddressed by political complexity. Whether it is disaster response or humanitarian assistance, India has stood strong, contributing particularly to those nearest to us. Excellencies, the world as we knew it is poised for transformational changes. It has been impacted in recent times by a succession of shocks, each of them significant by itself. The COVID pandemic called into question the over-centralized nature of globalization and has led all of us to seek greater resilience and reliability of supply chains. The repercussions of the ongoing Ukraine conflict have further heightened economic stresses, especially on food and energy. Climate events have added to disruption that the world is already facing. As for the promise of technology, it has certainly multiplied our capabilities, but also added to our vulnerabilities. Trust and transparency are legitimate expectations of a more digitized world. The quest to create a better global order would necessarily have to address all these issues. Among them, some are clearly more existential in nature and necessitate intense coordination by the international community. Climate action and climate justice are particularly noteworthy in this respect. In their pursuit, India has worked with partners on the International Solar Alliance, the One Sun, One World, One Grid initiative, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. We stand ready to support any collective and equitable endeavor to protect our environment and to further global wellness. Lifestyle for environment, or LIFE, as declared by Prime Minister Narendra Modi in Glasgow on the sidelines of COP26, is our homage to Mother Nature. India remains deeply committed to fighting climate change under the UNFCCC and the Paris Agreement. We do so on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances. We have announced our updated nationally determined contributions after COP26. Excellencies, India's steadfast commitment to South-South cooperation is by now well established and well recognized. Our approach is based on principles of mutual respect and national ownership, with a commitment to sustainable development for all. As we begin the G20 presidency this December, we are sensitive to the challenges faced by developing countries. India will work with other G20 members to address serious issues of debt, of economic growth, food and energy security, and particularly of environment. The reform of governance of multilateral financial institutions will continue to be one of our core priorities. Madam President, India would be completing its tenure as a member of the Security Council this year. In our term, we have acted
as a bridge on some serious but divisive issues confronting the Council. We have also focused on concerns such as maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Our contributions range from providing technology with a human touch to ensuring safety and security of UN peacekeepers. As the chair of the Counter-Terrorism Committee this year, India would be hosting its special meeting in Mumbai and New Delhi. I invite all member states to participate in it. We need to create a global architecture that responds to the new tech tools deployed against open, diverse, and pluralistic societies. Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive, and consultative approach to international relations. We believe that multipolarity, rebalancing, fair globalization, and reformed multilateralism cannot be kept in abeyance. The call for reformed multilateralism, with reforms of the Security Council at its core, enjoys considerable support among UN members. It does so because of the widespread recognition that the current architecture is anachronistic and ineffective. It is also perceived as deeply unfair, denying entire continents and regions a voice in a forum that deliberates their future. India is prepared to take up greater responsibilities, but it seeks, at the same time, to ensure that the injustice faced by the Global South is decisively addressed. Our call is to allow serious negotiations on such a critical matter to proceed sincerely. Negotiations on such a critical matter to proceed sincerely. They must not be blocked by violence. It is essential that the world listens to more voices of reason and experiences more acts of goodwill. India is willing and able on both counts. We believe and advocate that this is not an era of war or of conflict. On the contrary, it is a time for development and for cooperation. Madam President, in the past, this august assembly has served as a meeting point of views and as a catalyst for action. It is vital that we continue to believe in the promise of diplomacy and the need for international cooperation. Therefore, Madam President, let us strive to return to the course of seeking peace, progress, and prosperity. I thank you. Aida. Thank the Minister for तो देखिए, एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर चीन पाकिस्तान पर भारत का हमला, देखिए बड़ा हमला यहां पर कहा है, भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से यूएन के 77वें वार्षिक सत्र में विदेश मंत्री यहां पर संबोधित कर रहे थे और उनके संबोधन में उन्होंने 75 वर्षों में भारत के आर्थिक विकास की सराहना भी की है और जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव है उसको लेकर भी जिक्र किया। आतंकियों पर बैन लगाना चाहिए, युद्ध का नहीं विकास का युग है, ये बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आए एस जयशंकर। हमें नया भारत बनाना है, ये भी कह रहे थे और किस तरीके से उन्होंने यहां पर भारत की
जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर भी उन्होंने कहा। चीन और पाकिस्तान पर खास तौर से हमला बोला। भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, ये वो कहते हुए नजर आए। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री वैश्विक मंच से यहां संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसलिए देखिए तमाम बड़ी बातें यहां पर कह रहे थे कि आजादी के 75वें वर्ष में भारत गर्व से आपके सामने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। और साथ ही साथ युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं बल्कि विकास का युग है, यानी कि सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए नजर आए। किस तरीके से भारत, उन्होंने कहा भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति है इस समय भारत की और आतंकियों पर बैन न होना गलत है। यानी कि देखिए सख्त संदेश यहां से वैश्विक मंच से एस जयशंकर ने यहां पर दिया है कि भारत जो आतंकी हैं उन पर बैन जो नहीं किया जा रहा है वो गलत है। यानी कि सीधे सीधे संदेश यहां पर पाकिस्तान को है जो आतंक परस्त है, यानी कि आतंकियों को पनाह देता है और किस तरीके से आतंकी वहीं पलते हैं और आतंक वहीं पर फलता फूलता है। तो सीधे सीधे यहां पर एस जयशंकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए नजर आए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, बड़ी बात है देखिए यहाँ पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, साथ ही साथ 75वें वर्ष जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसको लेकर भी कहा, साथ ही साथ भारत जो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया उसको लेकर भी कहा। बिल्कुल शिखा, जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने 2 टूक शब्दों में चीन को और पाकिस्तान को संदेश दिया है और दुनिया को बोला है कि वो देखें कि चीन और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। उसका कंटेक्स्ट ये है कि हमने देखा है पिछले 1 साल से ज्यादा में मसूद अजहर से लेके साजिद मीर तक किस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए इन आतंकियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने में बहुत डिले किया है, रोका है। और उसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक विश्व गुरु जैसा संदेश दुनिया को दिया कि जब महामारी थी तो भारत ने किस तरह से सबकी मदद करी कोविड वैक्सीन और कोविड मैत्री से, और जब कोविड के बाद आर्थिक परिस्थिति डामाडोल हो रही है दुनिया की सप्लाई लाइंस की, तो किस तरह से भारत अनाज भेज के अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, फ्यूल भेज के श्रीलंका की मदद कर रहा है, मालदीव्स की मदद कर रहा है, अपने पड़ोस का ख्याल रख रहा है और दुनिया का ख्याल रख रहा है। और उससे भी ज्यादा हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बने, तो उसके जो फायदे होंगे वो पूरी दुनिया को होंगे। और जो हम कहते हैं दुनिया के पटल पे कि भारत जो है ग्रेटर गुड का एक फोर्स है, एक ताकत है जो सबको अच्छा सुख शांति दे, और उस तरह का संदेश विदेश मंत्री ने दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कश्मीर के बारे में विदेश मंत्री ने खुद कुछ नहीं कहा। हमारे राइट टू रिप्लाई में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक मुंहतोड़ जवाब हमारे एक जूनियर ऑफिसर ने आज सुबह दे दिया था और विदेश मंत्री ने खुद पाकिस्तान को कहें कि उसके जगह पे रखा, उसको अपने बराबर नहीं आने दिया। तो ये बहुत अच्छा संदेश मेरे ख्याल से विदेश मंत्री ने आज UNGA जो जनरल असेंबली है, आम सभा है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, उसके 77वें अधिवेशन में आज ये जो बातें कही हैं उससे भारत का आप समझे कि एक ऐसी तस्वीर दुनिया की नजर में आती है जो एक आत्मविश्वास से भरा भारत है और जो अपने विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के प्रति इतना दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ रहा है कि वो सबको साथ लेके सबके विकास करके, तो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ देश के अंदरूनी मामलों में नहीं पूरी दुनिया पर लागू होता है। बिल्कुल अभिषेक, बड़ी बात देखिए यहाँ पर कहते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम बातें कर रहे थे। तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वहाँ वैश्विक पटल से कहते हुए नजर आए।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात बहुत साफ साफ और बेबाक। भाई, पिछले कुछ दिनों में भारत के इतिहास में शायद पहली बार इतना कड़ा प्रहार किया है पीएफआई पर। गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख, उनकी गाइडेंस में इंप्लीमेंट करने वाले एनएसए अजीत डोवाल, इंप्लीमेंटर अजीत डोवाल और पूरा इन अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, इसको देखने वाले गृह मंत्री अमित शाह, इसको 60-40 में करो शर्मा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पीछे ऑक्टोपस, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं बॉस, मैं फंस गया यहां पे, क्योंकि ऑक्टोपस को हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या, लेकिन ऑक्टोपस के ये जो टेंटिकल्स देख रहे हैं आप, ये जो उसके हाथ पैर जो निकल रहे हैं इस जानवर के, इस समुद्री जीव के, इसमें क्या लिखा है, इसको 60-40 कर सकते हो शर्मा? 60-40 नहीं किया। दिक्कत यह है कि ये जो पीएफआई है, इसके ऊपर जैसे ही एक्शन हुआ, अमित शाह ने अप्रूवल दिया, अजीत डोवाल ने इंप्लीमेंट किया, और जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ कई लोगों को मिर्ची लगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, एनआईए और ईडी दोनों ने मिलकर किया, लेकिन सिर्फ एनआईए ने 45 अरेस्ट किए, 19 केरल में, 11 तमिलनाडु से, 7 कर्नाटक से, 4 आंध्रा से, 2 राजस्थान, 1 उत्तर प्रदेश और 1 तेलंगाना। 93 लोकेशंस पे 15 राज्यों में, मेरे पैनलिस्ट आ गए, आ जाइए सारे, 15 राज्यों में 106 पीएफआई मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। 106। इंप्लीमेंटेशन अजीत डोवाल, फाइनल अप्रूवल गृह मंत्री अमित शाह, और हो गया। जो रिमांड रिपोर्ट है दर्शकों, ये बहुत ध्यान से पढ़े, और मैं पढ़ के बता रहा हूं, इंग्लिश में है, उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी आपको करके बता। एनआईए की ये जो रिमांड रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा है, उसके बाद